Now, this Diwali, Prime Minister Narendra Modi celebrated aboard India's flagship aircraft INS Vikrant off Goa coast. This was a very powerful tribute to our naval heroes. Witnessing the spectacular air power demonstrations, Prime Minister Modi hailed Operation Sindoor and he said INS Vikrant was the one that brought Pakistan to its knees. From the deck of this very mighty carrier, Prime Minister Modi showed that India's strength is forged by the brave forces and a vision of unwavering leadership. Take a look. This Diwali, the sea swelled with patriotic fervour as Prime Minister Narendra Modi marked Diwali aboard India's maritime pride INS Vikrant off the coast of Goa. The PM reached the Indian Navy's floating fortress in a powerful tribute to the guardians of our shores. The Prime Minister witnessed a breathtaking air power demonstration. Takeoffs and landings on the carrier's short runway, not just in daylight, but even under the cover of night. अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS Vikrant. In a fiery address, Prime Minister Modi hailed Operation Sindoor, revealing how the might of INS Vikrant brought Pakistan to its knees. तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था. The Prime Minister, who makes it a point to spend Diwali with soldiers, spent the night on the Desi aircraft carrier. A soul-stirring cultural performance by Navy officers. हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए. To dinner with the extended naval family. And an early morning yoga session on the majestic deck. The Prime Minister stood shoulder to shoulder with our sea warriors. Modi made it a point to make this Diwali all about the glow of self-reliance in India's defense. हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा. नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है. ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या. अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं. मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए.
The Prime Minister ended his message with a soul-stirring assertion about India being the world's most dependable friend. अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक आपदा के समय, विपत्ति के समय दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है. From the depths of the ocean to the heights of global leadership, India stands tall. Powered by its brave hearts in uniform and led by a Prime Minister who celebrates Diwali not with lamps but with legends. Bureau Report, India Today.